At times we cannot cope up with a fast-paced life, which leads to physical, mental and emotional disorders, which shatter us completely. In the modern world, mental health disorders have become a leading cause of disability globally, exacerbating human health. With the divine blessings of Lord Dhanvantriji, hope lies in Ayurveda. Dr. Navdeep Sharma, a spiritual healer from the city of the Golden Temple. His graduation from Sri Lakshmi Narayan Ayurvedic College, one of the oldest institute in our country, associate with Sri Durgyana Education Foundation. His masters from the University of Madras. His PhD in the role of Ayurvedic herbs in psychological disorders. Listed in the World Book of Records for promoting Ayurveda and developing a chain of Ayurvedic treatment and Panch Karma centers in various parts of the globe. डॉक्टर नवदीप शर्मा को दुनिया भर में आयुर्वेद जागरूकता फैलाने के लिए सम्मानित किया गया। लंदन में इंडो यूके लीडरशिप समिट में द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया उत्कृष्ट पुरस्कार। लंदन में इंडो यूके लीडरशिप समिट का आयोजन, आयुर्वेद को लेकर जागरूकता पर जोर, द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लोगों को किया सम्मानित। Commendable Global Recognition Award was received by Dr. Navdeep Sharma and Dr. Monica Sharma on behalf of ND Care Nirogam Private Limited for leading Ayurvedic services at the British Parliament, UK. ब्रिटेन में बसा भारत का डंका, नवदीप शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा को मिला आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विस पुरस्कार। Dr. Navdeep Sharma has also been awarded the title of Pranacharya by the Akhil Bharatiya Ayurveda Mahasammellan. आयुर्वेदिक डॉक्टर नवदीप शर्मा को युवा प्राणाचार्य की उपाधि दी गई। भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मनोज तिवारी मौजूद रहे। नवदीप शर्मा को विश्व के सबसे युवा प्राणाचार्य की उपाधि मिली। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में मनोज तिवारी भी शामिल हुए। Up next, most trusted Ayurveda-based healthcare brand of the year, and it goes to ND Care Nirogam Private Limited. Dr. Navdeep Sharma, Director, to please join us on stage. देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए बड़े ऑनर्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं और उनका अवार्ड, उनके सम्मान में किए गए समागम में अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत मायने रखता है। Regular panelist on various national and international media channels. आते हैं कोरोना संदेश। सभी व्यूअर्स को मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा नमस्कार करता हूँ। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूँ और आज मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। 3 चीजों का इस्तेमाल करने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। A very good evening to all of you and a very good morning to all of you joining us from various parts of the globe. And as we always try to do in this live session, we always prefer to take your queries on these sessions, and while we are doing that, we also try to take some important topics in Ayurveda which can really benefit your health. And today, as our topic is how ABA therapy can help autistic child. Now that becomes very important, and all those who meet me generally in some of my meets internationally or through video conferencing sessions, or those of you who have met me in my OPDs, in most of these cases, I always guide you that while you are taking herbs from us, wherever the herbs are required, going for ABA therapies is equally important. Now, why ABA? Why is this ABA therapy required when we are giving treatment to autistic child, and from where did this concept of ABA therapy arise? So, when we talk about the reason why this ABA therapy is required and whether it is mentioned somewhere in Ayurvedic text, so I would like to tell you that in Ayurveda, when we are talking about various kinds of treatment, it is Deva Vipasya Chikitsa, Yukti Vipasya Chikitsa and Sattva Vajya Chikitsa.
Now, when we talk about Deva Pasha Chikitsa, it is the spiritual aspect in any treatment, taking the blessings from the divine and doing various kinds of mantra chikitsa and everything. And that's why whenever I talk to any parent, anyone whom I guide my treatments, I always guide them that whatever their faith is, they should stay deeply connected with that faith. They should ensure that they are doing their regular prayers, irrespective of which religion they are in. Depending upon the religion, they are to do connect their child in a better way to the spiritual aspects. And then comes the Yukti Vipasya Chikitsa. When we talk about Yukti Vipasya Chikitsa, about Yukti, it said in ancient text, Yuktischu Yojana Yatu Yujyate. Now, Yukti, methodology, it's a treatment in which we use the Ayurvedic herbs, and along with that, we use the Ayurvedic therapies. Both of them are combined with our experience, with the research which I did, depending upon the need of the child. There can be various needs. A child, when he's coming to us, a child may be hyperactive, and a child, when he's coming to us, he may be the opposite of hyperactive, that he's sitting there in the corner of a room without speaking much to anyone. A child may be normally active but may not be verbal, and a child may be verbal but yet the child is not socializing. A child may be socializing but a child may not be using the right kind of words and sentences when it comes to complex activities. So, depending upon the grade of the problem, the need of ABA really varies. The need of herbs also really varies. So, Yukti Vipasya Chikitsa consists of herbs. And then comes Sattva Vajja Chikitsa. When we talk about Sattva Vajja Chikitsa, Sattva in Ayurveda, Man is termed as Sattva. And whenever we do a treatment where we modify the thinking patterns much to the benefit of the patient, it is known as Sattva Vajja Chikitsa, which is very, very important, specifically in the children who are suffering from autism. So, before I go further ahead, Swati Bhatia ji, you have shared your details that your son Vyom and the code you have shared with me. Let me check if your uh, team has given me some further details. The coordinator who connected with you, if he has given me some further details, I will be going. So, the first question is Sagar Mohanty ji. And Sagar ji, I would like to have you active over here. If I see a message from your end, I'll immediately be going ahead with your question. And team from the back end, please do ensure that since we are having a very short time today, don't post those questions which have not been shared by the patients who are active over here. We are having Amanji with us, we are having Garima ji, we are having Swati Bhatia ji. So for us, these are the more important ones. And moving ahead, because there are multiple questions shared my way, but those questions are not from the names which you guys have shared over there. So unluckily, I won't be able to take those questions. So Aman Avasthi ji, you mentioned over here that I am taking every medicine and session provided by your wonderful team, but do I need to get speech therapy from locals? Amanji, if you feel that the child is entirely non-verbal, so then in that case, yes, a local speech therapy can always be of a support. OT is something which is not that favorable for us, but yes, speech is always something which is going to help if a child is completely non-verbal. Speech therapy working in tandem with the ABA therapy always is beneficial. स्वाति जी, you have written my son Vyom, code is you have given, coordinator is Teenam सर, जुलाई से ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन एबीए से चल रही है, रेस्टलेस और सेल्फ लाफ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ. देखिए जुलाई से स्वाति जी हमने स्टार्ट किया है, जैसा कि आपने बताया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी केवल 3 महीने हुए हैं. आपको याद ये रखना है 5वें या 6ठे महीने तक आते आते तक जो रेस्टलेसनेस है, सेल्फ लाफ है, वो घटेगी. बाकी मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि आपके एबीए सेशंस किन के अंडर चल रहे हैं और अभी तक कितने एबीए सेशंस हुए हैं, क्योंकि अगर मुझे नंबर ऑफ सेशंस कम लग रहे हैं तो मैं उन्हें बढ़ाने की सलाह दूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि साइकोथेरेपिस्ट हमें कोई ज़्यादा सीनियर चाहिए तो उस केस में मैं थोड़ा सा एक बेटर साइकोथेरेपिस्ट जो है वो आपको एडवाइस कर दूंगा. और आगे चलते हैं, और आगे जैसा कि डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सीमा, प्लीज डू नॉट पोस्ट एनी क्वेश्चंस वेयर
we are not having a message from the coordinators over there, because that is giving me too many questions, and the questions which are there in front of me are being missed in that regards. So going ahead, we were talking about ABA, that how ABA is good. So we are having over here already some of you who are discussing about ABA. So see, ABA can be of two types. One is command based ABA, the another one is non-command based ABA. Now it becomes very important to understand the kind of ABA. See, if we go for a ABA haphazardly, or if we leave our child somewhere where someone starts doing a command based ABA for the child, while a command based ABA may be good for a child who is completely non responsive for a few months, but for a child who is a bit responsive, a command based ABA can hamper his development, because when we are targeting an improvement which is a complete improvement, completely coming out of autistic phase, there the base needs to be very strong. We need to avoid commands as much as possible. It's only in case of severely autistic kids that we may need a bit of command based ABA. Otherwise, it should be a non-command based ABA where we are creating certain situations for the child and we are waiting for the child to become verbal over there. पपाया दत्ता जी, आपने बताया मेरी 3.3 इयर्स का प्रियाम दे मॉडरेट ऑटिज्म है, थेरेपी भी चल रही है, बट प्रियाम विदाउट रीजन हंसता रहता है, क्या ऑटिस्टिक बच्चे ठीक हो जाते हैं? देखिए 3.3 इयर्स पे तो दत्ता जी, अगर मैं बात करूं तो मोस्टली अगर ब्रेन डैमेज नहीं है, क्रोमोसोमल एबरेशन नहीं है, तो बच्चे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है, पेरेंट्स का सबसे पहले इस चीज पे विश्वास करना कि हमारा बच्चा ठीक हो सकता है, और फिर एक भी दिन जाया करे बिना इंश्योर करना कि हमने पूरे एफर्ट्स डाल दिए। अभी पीछे टीम के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मुझे टीम कुछ पेशेंट्स के बारे में बता रही थी कि हाँ जी, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। वो एटीट्यूड नहीं रखना है। चाहे हम इलाज कर रहे हैं, चाहे कोई दूसरा इलाज कर रहा है, चाहे कोई तीसरा इलाज कर रहा है, जो आपको ठीक लगता है उनसे इलाज कराएं। Wherever you feel that this doctor is good for my child, go ahead with the treatment, but don't delay it, because if we delay it, then it becomes really tougher. The percentage improvement goes down, because the younger the child, the easier it becomes for us. So that's why my request to you, whenever you feel that the child is different from some other child, tagging the child as being autistic, that is not that important. But making sure that the child becomes just as quick, as verbal, as social, as intelligent as a normal child is something which is really very important. अमन जी, आपने बताया एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं होते, एग्रेसिव हो गया है रिसेंटली इन 3-4 डेज। कभी कभार अमन जी 10 दिन के लिए बच्चे का एग्रेसिव होना या डिप्रेसिव होना, हमें इससे अपने आप को डीमोटिवेट हरगिज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पर्सपेक्टिव को वाइडर पर्सपेक्टिव पे लेकर चलें। बच्चे के बिहेवियर में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बड़ी बार पेरेंट्स जो हैं वो मुझे व्हेन दे अप्रोच मी, दे विल टेल मी दैट सर, वी स्टार्टेड विद एबीए सेशन एंड द चाइल्ड इज a bit more aggressive. Now what they don't understand is that in that ABA session, all of a sudden a child where the parents were easily understanding the sign language of a child, now under the guidance of our ABA expert, they start showing to the child that they are not able to understand the sign language. Now when they do that, you can very well imagine when they will do that, the child will become irritated. He will start feeling that up till now, my parents were listening to and understanding to my needs on my terms. All of a sudden, they have stopped that. So don't you feel at the age of the child will become a bit irritated, a bit hyper? But if you have faith and you carry on with what we are giving, slowly and gradually, the child gives up in that perspective and
Now the child becomes less aggressive, less hyperactive. So keep your faith firm. Don't let it dwindle, and keep us updated on any change which you feel is non-positive. But at the end of the day, don't have the slightest of doubt about what will be the outcome of treatment. If you give it your level best, be rest assured. So going ahead, uh, Amira ji, my cousin taking treatment from Indicare and we have seen great results. That's really appreciable, Amira ji, sharing your feedbacks over here. That really is a very positive thing for other patients also, and we really appreciate that. And we wish your cousin comes out of this autistic phase even more quicker. And there are some other questions also, but as I can't see you guys over there, there are questions which have been shared my way from Sagar Mohanty ji, then Kids Care Center, then Jyoti Paul ji, Tahera Kika ji, Rahul Nath ji, and then Karuna KK ji, Anand Jaiswal ji, Swati Bhatia ji. So any of you who is over there and still there with us, your questions have been posted by their coordinators. But once I see you over there, I'll immediately be going ahead with your question. And I was talking about a non-command based ABA, where we are creating situations for the child, and then we are waiting that the child uh, will feel a need to use words. A child will feel that by using words, my life become easier. So that is the basic role of ABA when we are training the parents for ABA with their child. And the ABA which we are guiding the parents is in day-to-day life generally. Generally, we observe the child for a few sessions. We ask the parents to share some videos with us where we can observe the child. We can see what are the likings of the child, what are the dislikes of the child. Our psychologist may ask some questions from you also, because a thorough analysis is the very base of planning the right kind of ABA for your child. At least for the first 4 to 10 sessions, depending upon child to child, a psychologist will require to thoroughly analyze your child. So don't expect miracles immediately, but be rest assured about the improvement. That definitely is going to come. It's only for the first few months that you simply need to believe on our words, because it is understandable in today's world where what you are committed over words at times that don't carry so much of weightage, because people many a times won't live up to what they say, but we just want a support from your end that despite that fact, if for a few months you can believe us and you can do whatever we are guiding, you are going to see results. If you keep on doubting that again and again, whether this is going to happen, whether I should do it or not, then that makes it tougher. So it becomes very, very important that have full faith and follow everything. So Sham Sundar ji have written, hello sir, my kid's sleep got improved with ND Ayurveda treatment, but her aimless laughing and aimless walking increased a bit. Sham Sundar ji, we will have to plan certain therapies for her here, where we are tidying her up. When we say she is having a lot of aimless walking and talking, we need to ensure that we are giving her ample junctures where she is utilizing her energy in the way in which it should be utilized. So speak to our ABA expert. Although there are a lot many things that can be done in the part of herbs, but still I believe it's the ABA part which should be chosen. And those of you who are there with us from UK, as I guided you the last time also, uh, it's a good news for all our UK patients that Omnia Healthcare, we have given training to the staff over there. They are now with us, and dharas. When you are there in India, nothing like that. But till the time you are in India, and if it's not easy for you to come over here, till that time, you can always visit over there, speak to your coordinator before visiting, and we can plan certain therapies for your child over there. And going ahead with the next question. The next question is from Rajiv Ranjan Sinha ji.
It's written that my son Vaibhav is getting treatment since 6 months, speaking 2-3 words, but does not talk and give answer to question. He does not ask question from us. A little aggressive. Now, Rajiv ji, as you have mentioned that it's now 6 months, he is taking treatment. So that means it's now a time to get your child reanalyzed. Always remember, for any one of you who is taking treatment under me, a thorough analysis after every 6 months. See, by the grace of Almighty, with the love which I have from all of yours end, there are so many patients in autism that I have that it becomes almost impossible for me to meet a patient prior to 6 months. But if I am not meeting a patient, a child, a parent, even after 6 months of treatment, the treatment is not going to work that much. So even if you are satisfied partly with the treatment or you are satisfied fully with the treatment, always remember once in 6 months, the minimize a video conferencing session or prefer meeting me up, because then we can plan it in a better way and we can ensure that the aspects which are being covered, we can reduce certain herbs for that, and the aspects which are still not covered, we can add something for that, and also we can do a bit of changings on the part of ABA. And Mr. John Wick, welcome, and you have shared your patient code. It was very nice meeting to you. We have started herbs, and Jason is taking them easily. Started ABA under your guidance name. John, thanks a lot for believing on us, for believing on Ayurveda, that is our medical science. Be rest assured, we'll ensure that we will be doing more than what we committed to you. Always stay positive as you are. And going ahead, there are some appreciable words, and Garima ji, if there is a bit of problem in the speech part, please mention that ABA is not being missed. ABA is something which is very important, and it's not necessary that you do ABA from us. See, listen, that is something again which I want to tell you guys. If you are doing ABA from anywhere else, keep on sharing videos with us, because what happens in most of the time, it is occupational therapy which is done for the kids, and they are being guided that it's ABA which is being done, and even if it's ABA, it is command based ABA. So when you are taking a treatment which is as per the research work which I did, please follow everything which I did over there. And Raji, ABA is a applied behavior analysis. Amanji, you definitely can get expect your child to be completely out of autism. It will depend upon the age at which you started the treatment, uh, and the number of sessions which you can take, the time which you can invest over there. अनु जी, आपने बताया है गुड इवनिंग सर, मेरी कोऑर्डिनेटर नेहा मिश्रा जी हैं, 3 इयर्स होने वाले हैं, कब ठीक होगा? आपके यहाँ से मेडिसिन चल रही है स्पीच प्रॉब्लम। अनु जी, एक बार मुझे थोड़ी सी डिटेल्स आपसे चाहिए होंगी, क्योंकि नेहा मिश्रा जी बाई चांस की बात है, हालांकि काफ़ी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको हमारे पास ज्वाइन किए भी कुछ ही महीने हुए हैं, तो मेरे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका केस किन के अंडर चल रहा था, कौन था जो आपके साथ डील कर रहा था, क्योंकि नेहा मिश्रा जी बहुत कम समय पहले हमारे पास आई हैं, और 3 साल में तो जनरली इलाज हम बंद कर देते हैं, 3 साढ़े 3 साल तो मैक्सिमा है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, अगर आपका ट्रीटमेंट ऐसा ना हो कहीं पे कि एनडी केयर के नाम के ऊपर आपका इलाज कहीं और से ही चले जा रहा हो, याद रखिए बहुत से ऐसे कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको क्लेम करेंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अगर आप चल रहे हैं एवरी 6 मंथ्स जो है वो आपको हमारे साथ याद करना है, इंटरेक्ट करना है, सेंटर पे आना है। एंड Rajit, when we talk about NHSC, NHS is not covering any complementary therapy. Our psychotherapies, however, yes, they can be covered by NHS. We, in the month of November, will be having a consultation session under Dr. Shukla over there. So, any kind of psychotherapy which you are taking from us through our UK team, that is covered under NHS. But if we talk about Ayurveda, NHS doesn't cover Ayurveda. Even when we talk about the allopathic,
treatment. There are very few certified kind of treatments and protocols that are covered under NHS. So unluckily, as of now, yes, there are people from NHS, there are doctors from NHS who are taking Ayurveda from us. But currently, unluckily, not just Ayurveda, homeopathy, Chinese herbology, any alternative medicine, NHS is not covering that. But the psychotherapy part, if you do that from our UK team, that is covered. थोरोकाम सिरप तो हमने इशिता जी बिल्कुल बंद नहीं किया है। अगर आपको थोरोकाम सिरप चाहिए है और आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है कि आपको नहीं मिल पा रहा है, आप प्लीज हेल्पलाइन पे लिखिए, अपने कोऑर्डिनेटर का नाम दीजिए और मैं चाहूंगा टीम की इमीडिएटली आप अवेलेबल करवाएं। थोरोकाम अवेलेबल है जी, ऐसा कोई, और वाकई में थोरोकाम बहुत बढ़िया सिरप है। एक तो थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत अच्छा है और शुगर फ्री है। सो थोरोकाम बंद नहीं किया गया है। अगर ऐसा कोई भी चैलेंज आया है, आपके कोऑर्डिनेटर ने ऐसा कुछ भी लिखा है, हेल्पलाइन पे आप लिख दीजिए, हम इमीडिएटली आपको अवेलेबल करवाएंगे। धरनी जायसवाल जी, आपने कहा सर सक्षम पूरा पंजा पर नहीं चलता है, टोस पे हमेशा चलता है, तो इसका क्या करें? ये एबीए में जब हम चल रहे हैं ना, आगे आगे कवर हो जाएगा। ये पार्ट है ऑटिज्म का, टो वॉकिंग एक साइन है ऑटिज्म का, बिल्कुल मत घबराएं, ये भी कवर हो जाएगा। ज्योति जी कोलकाता में आया करता था, रादर कोलकाता केष्टपुर में हमारा बहुत बड़ा सेंटर था। तो करेंटली क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है कोलकाता में, तो उस कारण से मैं अभी कोलकाता नहीं आ पा रहा। मालिक ने चाहा तो आगे मैं नहीं भी आऊं तो टीम वहां पे जरूर रखूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया लोग हैं कोलकाता के अंदर, मजा आता था वहां पे आकर के। आपके वहां पे ना वो उसको मेरे को हमारे यहाँ पे जिसे दिल्ली में पानी पूरी बोलते हैं, यहाँ पे उन्हें हम पंजाब में गोलगप्पे बोलते हैं। आपके वहाँ पे उसका बड़ा अलग सा नाम था, मुझे नाम भूल गया, पिचकू के पता नहीं कुछ अलग था, बड़ा डिफरेंट सा। कोलकाता बड़ी अच्छी जगह है, तो खुद भी मेरा एक जिसे कह सकते हैं इंजॉयमेंट सा हो जाता था जब मैं कोलकाता आया करता था। बट क्योंकि इंटरनेशनल मीट्स बहुत बढ़ चुकी हैं मेरी अभी करेंटली, बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी, यूएई, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप को भी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, तो इन्हीं में इतना समय निकल जाता है, along with taking care of those patients who have taken admissions with us. Now there are patients who come to our hospital, they stay with us, and what I feel is कि मेरी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके विजिट स्टे के दौरान मैं कुछ कुछ चक्कर जरूर लगाऊं को जो चंडीगढ़ सेंटर है उसके, और साथ के साथ फॉलो अप जरूर लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो अपना कीमती समय निकाल करके इफ दे आर एट द हॉस्पिटल, इट बिकम्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो उसी कारण से अनुचित दवाइयां मायने नहीं रखती हैं, ऐसे ब्रेनो ये ब्रेनोआर बिल्कुल मत दीजिए प्लीज। आप मिलिए और रेगुलरली मिल मिल के दवाइयां खाइए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए हमारी कुछ मेडिकेशंस अमेजोन पे अवेलेबल हैं और कुछ मेडिसिन ऑनलाइन भी अवेलेबल है और कुछ ओपीडीज में अवेलेबल है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दो दवाइयां हम ओपीडी में देते हैं, देखिए वो क्लासिकल आयुर्वेदिक मेथड से बनती हैं। हम मुक्तापिष्टी की बात करते हैं, आप कभी भी अपने कोऑर्डिनेटर से वीडियोस मंगवा सकते हैं उस मुक्तापिष्टी की जो मैं तैयार करवाता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो मेरे अंडर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जहां मैं ओपीडीज में उनको मिलता हूँ, पुराने जमाने के तरह ही खरल के थ्रू। टीम अगर चेक करो, अगर वीडियो आपके पास अभी है मुक्ता पिष्टी का डे 1, डे 2, डे 3 वाला, अगर आप बीच में मेरे लाइव के दौरान उसे चला पाओ तो हम दिखा पाए कि कितना एफर्ट और किस मेथड से हम पुराने वाले से तरीकों से जो शास्त्रों में लिखे गए हैं हम मुक्ता पिष्टी तैयार करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, सब कुछ यही बोलते हैं उसको, हाँ जी जी जी। तो वो जो दवाइयां हम लोग तैयार करते हैं ट्रेडिशनली, उसके साथ का तो कुछ भी नहीं है, वो ओपीडी में है। अब बहुत से पेशेंट्स ओपीडी में नहीं आ पाते हैं और उन ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ सभी के लिए दवाइयां बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से तो बहुत थोड़ी दवाई बनेगी। आज हम कितनी भी खरल क्यों ना ले आए बड़ी, हमारे पास बड़ी बड़ी खरल्स हैं, उसके बावजूद एक फैक्ट्री में क्विंटल्स के हिसाब से जो दवाइयां बन रही हैं वो कभी एक खरल में नहीं बन सकती हैं। ऐसे ही अगर मैं काढ़े को पुराने मेथड्स के साथ बना रहा हूं, जैसे बताया गया है, मिट्टी के पात्र में, तांबे के पात्र में, जहां लोहे का पात्र बोला गया लोहे के पात्र में, और अगर बोला गया है कि इसको हर्ब्स को 10 दिन के लिए भीगा रहने दो तो उनको भिगो करके रखना,
कि सारे ट्रेडिशनल मेथड से जब दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो ये दवाइयाँ बहुत समय लेती हैं बनने में। और दूसरी बात, इन दवाइयों में मैं प्रिजर्वेटिव डालना अवॉइड करता हूँ, मिनिमम बहुत जरूरी हो तब, वरना जो ब्रेनो आर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स के लिए खुद के मेथड से प्रिपेयर करके, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। जो मुक्ता पिष्टी कर रहा हूँ उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। जो वच्चादी घृत तैयार करवा रहा हूँ उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जब हम तैयार करवाते हैं प्रिजर्वेटिव्स के बिना, इनको ऑनलाइन अमेज़न के स्टोर पे कोरियर के थ्रू भेजना टफ हो जाता है। तो इसीलिए ये खास तरह के बैचेस जब लोग आते हैं मिलने के लिए, वहां मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। अब इसके बाद सेकंड मेडिसिन आ जाती हैं, वो मेडिसिन जो देख रेख में बनाई जाती हैं डॉक्टर्स की, और हमारे कुछ शॉपिफाई के स्टोर्स पे, मोबाइल ऐप्स पे अवेलेबल हैं। वो डिफरेंट हैं हमारी ओपीडी वाली मेडिसिन से, लेकिन वो भी बढ़िया हैं। अब इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी ऑफ मेडिसिन आ जाती है, तीसरे नंबर वाली। वो बियॉन्ड कंट्रोल है हमारे। वो बियॉन्ड कंट्रोल किस लिए हैं हमारे से, कि हमारे ऑनलाइन वाले स्टोर से कुछ कंपनीज दवाइयाँ परचेज करके, क्योंकि रोज की हजारों दवाइयाँ बिकती हैं, उन्हें अपने तरीकों से कभी कितनी कितनी देर के लिए स्टोर करके वो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू बेच देती हैं। वो जरूरी डायरेक्टली हम नहीं बेच रहे होते हैं। और हमारी तरफ से भी जहां अवेलेबल है, आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सी हम लोग दे रहे हैं, कौन सी आप ऐसे ले रहे हैं। सो प्लीज आप हेल्पलाइन नंबर पर एक मैसेज किया करिए। ऐसे अवॉइड किया कीजिए अपने आप से दवाइयां लेनी, और बिना मिले 6 महीने से अधिक नहीं, एवरी 6 मंथ्स कोशिश करिए कि आप मिलें जरूर। और आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे चलते हैं। अनु जी आपने क्या है, सर आपके सेंटर ऑनलाइन आई हैं? नहीं नहीं अनु जी, मेरी आपसे विनती है, मैं फिर से आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, बच्चे का मामला है, मत ऑनलाइन इलाज किया कीजिए। और याद रखिए, मेरे सेंटर्स नहीं है। बहुत बार लोग मुझे बोल देते हैं आकर के भी, आपके सेंटर्स हैं। मालिक की बड़ी रहमत है मेरे पे, बहुत दया है मेरे पे, लेकिन ऑनलाइन चीजें मेरे कंट्रोल के परे हैं। इमरजेंसी है, कोई एक बार ऐसा आ गया है मौका, नहीं आ पा रहे हैं, मंगवा लीजिए ऑनलाइन। लेकिन तब भी सबसे पहले हमारे डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, पूरे के पूरे वीडियोस भेजिए, एनालाइज करवाइए दोबारा से केस को। लाइव सेशन पर मुझे आकर आप बता सकते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ने एनालाइज करके क्या बताया है। मिस मत कीजिए, छोटी सी छोटी चीज भी हमने भूलनी नहीं है। देखिए, हमें पता है आप बच्चे से अपने बहुत प्यार करती हैं, और ये उस नन्ही सी जान की जिंदगी का सवाल है। मालिक ने आपकी ड्यूटी लगाई है कि आप पूरे एफर्ट्स पुट इन करें, और हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम जब जब आप हमारे पास आए तो सही गाइड करें। इमरजेंसी है, कोई बुराई नहीं ऑनलाइन में, लेकिन 3 साल, 3 साल में अब तक हम कितनी बार मिले होने चाहिए थे? कम से कम भी 6 मंथ्स के बाद एक बार, मतलब 6 बार। तो 6 टाइम्स 3 साल में मिलना मैंडेटरी है, अगर हम ये चाहते हैं कि क्विकेस्ट रिकवरी आए और कंप्लीट रिकवरी आए। इमरजेंसी में आप फिजिकल मीट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चेंज कर सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। I'll be giving reply in English because rest of the people will also be able to understand that whenever we are talking about diet of autistic kid, always remember the diet should be easily digestible, preferably home cooked food. Instead of sugar, shakkar can be used, honey can be used, but there is no harm in using sugar, but it should not be over sugary. Otherwise, sugar is not bad. The ghee preferably should be A2 ghee. There were parents who were facing problem with procuring A2 ghee, the Gir Gaye ghee, which is good for the child. So what we did was, we cannot rear cows, but we visited various farms, and the farm which we like the best, we have now started procuring A2 cows ghee from them. And believe me, whatever might be the MRP of that ghee, for any of you who is taking treatment from us, the cost for that ghee for you will be the same cost at which we are procuring that ghee from the vendors. You can contact your coordinators from that.
I am not going to earn a single penny out of that ghee, and I have clearly guided to my team also, because it was very important for me to ensure that the children and the parents are getting the right kind of ghee. It is very tough in this world to find out what they are doing, and we have tried our level best. You can also check that ghee. We tried our level best. Whomsoever we found was the maximum authentic person, we procured it from them, and we are consistently procuring it and making it available for the children who are taking treatment from us. So you can also give it a try whenever you are over here. And Faizan ji, आपने बताया है, I am father of Faizan, and you have shared that. Oh, the question is just going down. Yes, Ibrahim, and a lot of parents at his school give their kids Sizodon as these kids are hyperactive. We have been recommended this earlier as well. Should we consider not at all? Faizan ji, not at all. Sizodon, when we are talking about that, see, definitely if a child is too aggressive, is hitting lot many kids, temporarily they will be forced to use risperidone. But otherwise, for non-destructive hyperactivity, it should always be avoided, because it further reduces the coordination between the conscious and the subconscious, and later on it becomes very tough to withdraw Sizodon. Aruna ji, we are trying to again reoperate a center in Delhi sometime down the lane, and whenever it happens, I definitely will be meeting you over there. But as of now, Delhi is very near to Chandigarh. Why not join us at Chandigarh? थोड़ा सा ड्राइव कीजिए, बढ़िया सा मौसम एंजॉय करते हैं। सबसे पहले कुंडली में आप गुलशन से या अमरीक सुखदेव के पास बढ़िया सा भोजन कीजिए, उसके बाद चंडीगढ़ आइए, हमारी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करिए। हम चंडीगढ़ आ जाइए अभी के लिए। दिल्ली का जैसे ही बनेगा, आई वुड रियली लव दैट। दिल्ली में हमारा पहले भी बहुत बढ़िया सेंटर था, अभी टीम नहीं है हमारे पास, प्रेमाइसिस हैं, तो जैसे ही अच्छी टीम अरेंज होती है, टीम भी आएगी, मैं भी तब ज़रूर जो है वो आऊँगा। The message is from Trinity Trinita. You have asked, hi, can you see your Facebook private message? Unluckily, this is something which I really want to tell all of you. At times, कभी 6 महीने में एक बार जब मैं मैसेंजर ब्राउज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से एक विश्वास के साथ आप लोगों ने मैसेज डाले होते हैं, बट अनलकीली ड्यू टू so many messages and all, so many social media handles to cover. Currently, all those messengers, I am a bit away from them. That is being handled by my team. वो team handle करती है. The best way in which you can convey a message to me is always coming over here, and wherever you feel that you want a message to come to me which you don't want anyone else to see, if there is something very confidential, then the best way is email it to Dr. Navdeep Sharma @ndayurveda.com. You can directly email to me. I won't promise that I'll be replying back, but that at least it will be in my email box, and at some time, whenever I go online over there, I'll be able to reply you back. I'm a bit, despite being a techno-savvy doctor, a bit occupied in so many things, it becomes tough at times to be online. And thanks a lot. Now I'll be taking a break from you because समय अभी अलाउ नहीं कर रहा है। थोड़ा सा लेट आज आप लोगों के साथ ऑनलाइन हुआ, कहीं बाहर था, बट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, आई वाज टू बी ऑनलाइन। एंड सी द टीम, हैट्स ऑफ टू आवर टीम आल्सो, दे आल्सो ensured that yes, I can be joining you guys even at a later time. So हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप थोड़ा सा लाइक जरूर करते रहिए, थोड़ा शेयर जरूर करते रहिए। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, डेफिनेटली हम किसी भी एज में हैं, किसी भी सक्सेस के लेवल पे हैं मालिक की दया से, बट व्हेन यू डू लाइक्स, व्हेन यू डू शेयर्स फॉर आवर वीडियोस, दे रियली आर मोटिवेटिंग फॉर अस। हमें पता चलता जाता है कि हम उस मालिक की दया से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी आपके कोई कमेंट्स भी हों, कभी भी कमेंट्स हों, आप चाहते हैं कि इन वीडियोस में हम कुछ चेंज करें, आपके अपने मतलब के कोई टॉपिक्स हों, you're always welcome to share those topics with us so that we can cover the topics which you guys want. So हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Stay wrist pushed, stay nirogam. Namaskar. Autism is a temporary phase in the life of a child if treated timely. Patient name Parth, age 3 years, disease autism. Chief complaints: speech delay, hyperactivity, irritative behavior, less interaction, less understanding.
The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on April 2023 at 1:09 p.m. and felt the scope of treatment to work for the child. He did not respond clearly and showed irritative behavior most of the times. करो आ जाएगा वो। कलर करो, वेरी गुड पार्थ, कलर करो। नो, इस हैंड से कर, वेरी गुड, इसके अंदर रख दो, वेरी गुड। पापा का हैंड, दीदी का हैंड करो, हैंड, चलो, वेरी गुड, खाओ, वेरी गुड। हेलो पेरेंट्स, पार्थ हेलो करो, हेलो करो। ये पार्थ है, मेरा बेटा, 4 साल का होने वाला है। लास्ट ईयर जुलाई में हम डॉक्टर नवदीप शर्मा सर के यहाँ पहुँचे थे। हमें एक सर ने मेरे बताया था सर के बारे में। हमने सोचा भी नहीं था कि आज 9 महीने में पार्थ मम्मा पापा हमसे बोलेगा इतनी जल्दी। हम तो मतलब बड़ा एक माँ पेरेंट्स के लिए एक रहता है कि कब हम मम्मा पापा सुनेंगे पार्थ के मुंह से। आज पार्थ मम्मा पापा और विद सेंस सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले ही स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। और जो सर ने जो लाइफ में हमारी खुशियाँ दी हैं, बहुत एक पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि उसका बच्चा इतनी जल्दी और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारी लाइफ में इतनी बड़ी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू एंडी निरोगम। Autism is a temporary phase in the life of a child if treated timely. Patient name Vivan, age 4.5 years old, disease autism. Chief complaints: speech delay, less understanding ability, inexpressive, sensory issues, lack of focus. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 27th November 2022 at 11:00 a.m. and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints were speech delay, unable to write and sensory issues. The child could not write by himself. He was also not very socially active. Throughout the treatment, significant improvement was seen in the child. He started writing on his own, gave answers and also became active. He started interacting more and gave answers instantly. His focus also saw an improvement. He also participated voluntarily in activities and also excelled academically. Instant responses were also seen within a few months of treatment. With improved attention span, he became quick in recognizing and mind games as well. He was able to interact more with peers, participate in class and also understand things in a better way. हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड मेरा बेटा है 5 साल का होने वाला है एंड मुझे नवदीप सर से मेडिसिन लेते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है एंड आई हैव चेंज लाइक आई हैव सीन इमेंस चेंज इन माय सन। लाइक जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वाज लाइक वो एक वर्ड ही बोलता था एंड जब से हमने मेडिसिन शुरू की है एंड मेडिसिन के साथ साथ शिरोधारा भी इसकी मोर देन 1 ईयर से चल रही है एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल उसमें ड्रास्टिक चेंज है। जैसे अभी वो सब कुछ अपनी चीज़ें 99% अपनी चीज़ें वो बता पाता है ईजिली एंड दैट टू ही स्टार्टेड मेकिंग फुल सेंटेंसेज ऑल्सो। क्लास में भी अकेडमिकली ही इज़ गोइंग सुपरबली ऑसम। ही हैज स्कोर्ड 88% इन हिज लास्ट टर्म एंड जहाँ पे जब वो नर्सरी में था ही जस्ट स्कोर्ड 55%, नॉट इवन 50%। एंड अभी जस्ट टर्म ए में ही इज़ इन जूनियर केजी, अभी टर्म ए में उसके 88% नंबर आए हैं। नाउ ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो। पहले वो मतलब पकड़ के लिखता था, पेंसिल पकड़ के, उसका ग्रिप भी प्रॉपर नहीं था बट अब वो लिखने भी लग गया है। प्लस मुझे जो मेडिसिन से जो मुझे मेन फ़र्क दिखा है दैट इज़ सेंस, जो मुझे चाहिए था कि सेंस में थोड़ी सी डेवलपमेंट। पहले उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई घर में आ रहा है जा रहा है, वो जस्ट कमांड वाइज ही चल रहा था। लाइक ही स्टार्टेड फॉलोइंग माई कमांड्स, लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं कर रहा था। बट जब से मेडिसिन लेना शुरू किया आफ्टर 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं। 3 मंथ्स में धीरे धीरे चेंज आए। अब विद इन अ ईयर तो ड्रास्टिक चेंज है। जैसे उसको देख के आप बोल ही नहीं सकते हो कि दैट ही हैड माइल्ड ऑटिज्म, तो उसको माइल्ड ऑटिज्म ही था बट अब वो माइल्ड ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम से भी निकल गए। अब जस्ट उसके थोड़े सिम्टम्स रह गए हैं एंड वी आर स्टिल इन टच विद नवदीप सर। वी आर स्टिल टेकिंग द मेडिसिन। उनकी जो भी गाइडलाइंस है, बीट डाइट, बीट उनका यंत्र, वी आर डूइंग दैट रिलीजियसली एंड आई मीन इट।
विद दैट हम उनको हीलिंग म्यूजिक भी सिखाते हैं, जिससे बच्चा इंटरनली भी हील होता है। मेडिसिन हम दे रहे हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दी मेडिसिन एंड फैसिलिटीज। द डॉक्टर्स आर एवरी टाइम अवेलेबल। और मुझे हफ्ते में 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे हफ्ते में 1 कॉल ज़रूर आता है यहाँ से, दैट यू नो वेदर द थिंग्स आर गोइंग राइट। विवान के बारे में दे आस्क कि वो कैसा चल रहा है। तो लाइक दे आर इन टच, द होल टीम इज इन टच विद मी मोर देन 1 ईयर। मेडिसिन यहाँ पे टाइम से आ रही है, हमें घर पे डिलीवरी मिल जाती है। जब हमें आना होता है नवदीप सर के, हमें कॉल्स आ जाते हैं दैट यू नो वो अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू मीट। तो द एज अ क्रक्स आई एम सेटिस्फाइड विद द मेडिसिन ऑल्सो एंड विद द स्टाफ ऑल्सो। थैंक यू। Autism is a temporary phase in the life of a child if treated timely. Patient name Bhanu Pratap, age 6.7 years old, disease autism. Chief complaints: hyperactivity, speech delay, communication, short sitting, problem with understanding. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 2nd November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints of the parents of the child were hyperactivity, speech delay and short periods of sitting. The child also did not communicate much. Within a year of treatment from ND Care, a significant improvement was witnessed in the child. His condition showed positive results with reduced hyperactivity, improved speech, better understanding and longer sitting. He even communicated and expressed his feelings in detail. Participation amongst peers has also increased. The child also participated actively in his school activities and showcased confidence. बच्चे का ट्रीटमेंट पूरा चल रहा है, तो हमारे बच्चे की बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो हमारा बच्चा बात भी नहीं करता था, कोई समझता नहीं था। अब इसमें स्पीच भी आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है जी। अभी मतलब बैठ जाता है, पहले 10 मिनट भी बैठता था। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चे में, पहले कुछ भी नहीं था। तो सर ही हमारे लिए भगवान है। मतलब पहले हमें पता भी नहीं था, सर का हमें पता होता तो हम पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते। तो हम खुश हैं अपने बच्चे के लिए। Autism is a temporary phase in the life of a child if treated timely. Patient name Ritika, age 20 years old, disease autism. Chief complaints: hyperactivity, behavioral issues, shouting and screaming, irritation. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 23rd January 2023 at 3 o'clock pm and felt the scope of treatment to work for the child. Before the treatment, the chief complaints were regarding hyperactivity, shouting and behavioral issues. She screamed abruptly and showed irritative behavior frequently. With the ongoing treatment, significant improvement was there in her condition. Hyperactivity was reduced a lot. She also became more calm and also stopped shouting. Along with that, irritative behavior also showed improvement. She also got involved in co-curricular activities like sketching and painting, which improved her performance. She also showed a lot of growth in terms of expressing herself. She started singing and other activities. हम रणजीत सेन हैं। माई डॉटर का नेम है रितिका सेन। शी इज़ एन ऑटिस्टिक पेशेंट। 1 साल पहले गूगल में डॉक्टर नवदीप शर्मा को देखा, उनका साइट देखा, तो उसके बाद हमने कांटेक्ट किया है और 2023 जनवरी से हम मेडिसिन ले रहा है अंडर सुपरविजन डॉक्टर नवदीप शर्मा। 9 महीने में हमको बहुत ही असर मिला वो मेडिसिन से। पहले शुरू में मेरा बच्चा चीखते थे, हर टाइम अचानक चीखते थे, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहते थे, हाइपर था, बहुत ही हाइपर था। मेडिसिन लेने के बाद उसका ये चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बहुत ही कम गया है। मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा भी दिया है और साथ साथ में साइकोथेरापी भी चल रहे थे। तो ये साइकोथेरापी, पंचकर्मा और मेडिसिन लाके कुल मिला के मेरा बच्चा अभी बहुत ही बेटर है, पहले से बहुत ही बेटर है। आयुर्वेद में हमको लगता है डॉक्टर नवदीप शर्मा स्पेशली फॉर ऑटिज्म के लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। थैंक यू। Autism is a temporary phase in the life of a child if treated timely. Patient name Hirav Raj Singh Tomar, age 4.5 years old, disease autism. Chief complaints: speech delay, hyperactivity, poor eye contact, less social interaction, low attention span. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 10th August 2023 at 10 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The child was diagnosed with autism spectrum disorder, which caused the issues of hyperactivity, social interaction and speech delay for the child. With the onset of treatment, the results started showing up. There was an improvement in hyperactivity and increased social interaction. मेरे बेटे का नाम हीराव राज सिंह तोमर है।
हम लोग भोपाल से आए हैं। मेरा बेटा जब 3.5 साल का था तब वो उसको डायग्नोस हुआ था ऑटिज्म। फिर मैं रेगुलर रिसर्च करती रहती थी गूगल में। फिर मैंने एक बार यहाँ इंस्टीट्यूट का और एंटी केयर के बारे में सर्च किया, तो यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंटली सर ने बोला है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेज होती है लाइफ में बच्चों की। तो वहाँ से मुझे लगा एक बार मुझे देखना चाहिए। फिर मैंने ऑनलाइन सेशंस लिए, थोड़ी हाइपर एक्टिविटी कम हुई, थोड़ी सी स्पीच भी डेवलप हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिजिकली ये जो चंडीगढ़ सेशन यहाँ पे जो इन लोगों का सेंटर है यहाँ हम लोग आए, वहाँ हम लोगों ने पूरा जो इनका पंचकर्म और सारे जो सेशंस होते हैं योगा EVA क्लासेस सारी। तो अभी हमारा आज 4th डे है। 4th डे में मुझे काफ़ी अपना बच्चा रिलैक्स लग रहा है। इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। स्पीच भी जनरेट होना और अच्छे से स्टार्ट हो रही है, सेंटेंस भी उससे बुला रहे हैं तो बोल रहे हैं। और यहाँ के जो सारे स्टाफ मेम्बर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे से सारी सेशंस और क्लासेस जो भी होती हैं सारी चीज़ें बहुत हेल्प कराते हैं। यहाँ का स्टे भी बहुत अच्छा है, तो मुझे यहाँ ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी लगी। मेरे बच्चे को भी काफ़ी मदद मिली इन चीज़ों से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मुझे।